ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Janmashtami Katha. Hare Krishna. मैं आप सभी का जन्माष्टमी कथा में स्वागत करता हूँ। I am feeling extremely grateful to meet with all of you on Wednesday evening. और मैं आप सभी को आज बुधवार की शाम को मिलकर बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ। As we had discussed in previous pastimes of Krishna with the wives of the Brahmanas, that how just by hearing about Krishna, chanting about Krishna, remembering Krishna's pastimes, we can actually directly associate with the Supreme Lord. जैसा कि हमने भगवान कृष्ण की ब्राह्मण की पत्नियों के साथ जो लीला थी उसमें सुना था कि केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके उनके बारे में सुनकर हम भगवान कृष्ण से संग कर सकते हैं। So in the same way, we are trying to hear these pastimes of Krishna so that we can actually associate with Krishna. तो उसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम भगवान कृष्ण का संग प्राप्त कर सकें। So Janmashtami is a time where we see that Krishna takes birth in our own heart. तो जन्माष्टमी वो समय है जब हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लें। And if Krishna takes birth in our heart, then all auspiciousness will come in our lives. और यदि कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन में सब प्रकार की पावनता आ जाएगी। That's why we chant Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garuda Dhwaja. इसीलिए हम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज का जाप करते हैं। And we see that Brajavasis, their entire life was centered around Krishna, and there was all auspiciousness in Vrindavan. और हम देखते हैं कि ब्रजवासियों का पूरा जीवन भगवान कृष्ण के चारों ओर ही घूमता था और उनके जीवन में सब प्रकार की पावनता थी। There were so many difficulties in their life, so many demons coming, but they were always blissful. उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे राक्षस आते थे, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहते थे। Because they learned the art of doing everything for the pleasure of Krishna. क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान कृष्ण की खुशी के लिए करने की जो कला है वो सीख ली थी। I don't think anyone would have gone through
series of daily tragedies, just like the Brajavasis were going through. मुझे नहीं लगता कि कोई जिस प्रकार ब्रजवासी प्रतिदिन परेशानियों से गुजरते थे उस प्रकार से कोई और अपने जीवन में परेशानियों से गुजरता है. Practically 3 times a day, 3 demons would come to trouble the Brajavasis. और प्रतिदिन 3 पहर 3 राक्षस आते थे परेशान करने के लिए. If some of us even face such a situation, even for one day, would go into psychological depression. और हम में से अगर कुछ लोगों को अगर एक दिन के लिए भी ऐसा अनुभव करना पड़ेगा तो हम मानसिक अवसाद की अवस्था में चले जाएंगे. And we would search for and look for people complaining and blaming and asking, why me? और हम ढूंढेंगे कि किसको हम दोषारोपण कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. But Brajavasis, they simply accepted that as mercy of Krishna, and they saw that how their love for Krishna is increasing more and more by these difficulties. ब्रजवासियों ने देखा कि किस प्रकार इसके कारण उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा था. So Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, has written a very wonderful book called Govinda Lilamrit. दास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है उन्होंने गोविंद लीलामृत नाम से एक बहुत सुंदर पुस्तक भी लिखी है. This book contains all the pastimes of Krishna that Krishna does in a single day. इस पुस्तक में भगवान कृष्ण की एक दिन में की गई सभी लीलाओं का वर्णन है. And that entire book is about 3000 pages. और ये पूरी पुस्तक 3000 पेजेस से ज्यादा की है. And Krishnadas Kaviraj Goswami says this is just one drop of what Krishna does in one day. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो एक दिन में कृष्ण करते हैं ये केवल उसकी एक बूंद है. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he actually wrote a beautiful commentary on this book called Govinda Lilamrit. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस पुस्तक गोविंद लीलामृत पर एक टिप्पणी लिखी थी. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he offered that book to his father Bhakti Vinod Thakur. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये टीका अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर को समर्पित की थी. And Bhakti Vinod Thakur read it and he was feeling so much of bliss and ecstasy, but he said that print only 2 copies of this book. और भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने आनंद का अनुभव किया कि उन्होंने कहा कि केवल इसकी 2 प्रतियां ही आप प्रकाशित कीजिए. One for myself and one for yourself. एक अपने लिए और एक मेरे लिए. Because I don't know anyone in Kali Yuga is qualified to read and understand the intricate, intimate details of these pastimes. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कलयुग में कोई भी भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को समझने के योग्य होगा. So out of all the pastimes described, Kaviraj Goswami says he divides the pastimes into 8 parts. तो जितनी भी लीलाओं का वर्णन किया है उनको कविराज गोस्वामी ने 8 भागों में विभाजित किया है. There is 24 hours in a day, as all of you know. आप सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. And in a day there are 8 prahar, a unit of time. और एक दिन में 8 प्रहर होते हैं जो कि समय की एक इकाई है. In that way, 1 prahar is actually 3 hours. तो अगर ऐसे देखें तो एक प्रहर 3 घंटे के बराबर है. And Kaviraj Goswami describes what pastimes Krishna performs in each of the prahar of the day. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक प्रहर में भगवान कितनी क्या-क्या लीलाएं करते हैं वो सब उन्होंने बताया है. So today we will be discussing some pastimes that happen in one
of the prahar of one day in Golok Vrindavan and also here in Bhauma Vrindavan. तो आज हम भगवान द्वारा एक दिन के एक प्रहर में किए गए लीला के बारे में चर्चा करेंगे जो उन्होंने गोलोक वृंदावन में की और भौम वृंदावन में की. This was the Chaitra Purnima. ये चैत्र पूर्णिमा का दिन था. And the full moon was there. Actually, we know that Krishna performs Ras Leela only in Kartik Purnima, Sarat Purnima, but actually Krishna performs Ras Leela every night and especially on the Purnima nights. तो हम सुनते हैं कि भगवान शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को रास लीला की लीला करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हर पूर्णिमा पर रास लीला करते हैं. There is some relation between moon and romance, which as a sannyasi I don't know. तो चंद्रमा और इस प्रेम के व्यवहार में कुछ ना कुछ संबंध है जो सन्यासी के रूप में मैं नहीं समझ सकता. But I have seen my sisters and all when they watch movies and all, and there were Bollywood songs and all, lot of heroes and heroines, they look at the moon and they sing some duet songs. तो मैंने देखा है, मेरी बहन जब मूवी देखती थी तो उसमें दिखाया जाता था कि नायक और नायिका चंद्रमा को देखकर कुछ गाना गाते थे, युगल गीत. And I used to always wonder in the childhood why moon is always coming, and there are a lot of similes, metaphors in the songs with moon. मुझे नहीं समझ में आता था कि चंद्रमा का बार-बार चंद्रमा का क्यों विवरण आता है और इसका प्रेम के साथ क्या संबंध है. And all the ladies, all the girls, all the boys, when they are having love, and then they compare everything to moon, the situation to the moon, to the glowing face of the girl to be the glowing moon, and all those things. और जब तरुण लड़के लड़की प्रेम करते हैं तो लड़के हमेशा अपनी प्रेमिकाओं के चमकते हुए चेहरे को चमकते हुए चंद्रमा से तुलना करते हैं. But when I came to bhakti, I understood that this whole world is actually a perverted reflection of the spiritual world. जब मैं भक्ति में आया तो मुझे समझ में आया कि यह पूरा संसार आध्यात्मिक संसार का एक बुरा प्रतिबिंब है. So the living entity, the soul, actually enjoys the wonderful romance with Krishna in spiritual world. तो जीवात्मा जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम है उसको अनुभव करने का प्रयास करती है. But then somehow the living entity somehow develops some desire that I don't want Krishna in my life. I want to have romance with someone else. और किसी कारण से इस जीवात्मा के अंदर ये भाव आता है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करना चाहता, मैं किसी और के साथ इस प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता. And then the same romantic atmosphere of the spiritual world gets perverted in this world, but the moon remains. वही जो प्रेम का आदान प्रदान है वो इस भौतिक संसार में एक खराब प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा वहीं का वहीं रहता है. And the Krishna Chandra of spiritual world, who enhances the romance of the spiritual world, becomes this moon of this material world with lot of black spots. तो आध्यात्मिक संसार के जो कृष्ण चंद्र है जो कि प्रेम के आदान प्रदान को बढ़ाते हैं, वो इस भौतिक संसार में आके इस चंद्रमा में परिवर्तित हो जाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे काले धब्बे हैं. So this is, I will not say the purport, but you understand that because the moon of this world has spots and moon is the emblem of romance of this world, so you can understand what is the quality of romance of this world. तो मैं आपको तात्पर्य नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि इस जगत के चंद्रमा में काले धब्बे हैं, तो इस जगत का प्रेम भी किस प्रकार का होगा. And that is why this whole romance of this world has so much of frustration, so much of
कोला परेडी. तो इसी कारण से इस जगत का जो प्रेम है वो कितना तनाव भरा है, कोलावेरी है. I was recently putting the word hope in the Google search, and I saw there are so many videos on the name of hope for frustrated love. Hare Krishna. तो हाल ही में मैं मेटल पर होप शब्द को सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो हैं उन लोगों को आशा देने के लिए जिन्हें प्रेम में निराशा प्राप्त हुई है. And no matter how much ever you give hope to the hopeless people of this world, they still remain hopeless, and the number of just frustrated people who are not experiencing any love just is increasing. लेकिन आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, जो निराश लोग हैं उनके जीवन में आशा नहीं आती, और निराश लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. Because the reality is the living entity can never experience any love and romance in material world. क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो जीवात्मा है वो इस भौतिक संसार में कभी भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती है. You all can try it out. आप सब लोग प्रयास कर सकते हैं. But those who are intelligent, they don't learn by experience, they learn by hearing. लेकिन जो विद्वान होते हैं वो अनुभव के द्वारा नहीं सीखते हैं, वो श्रवण के द्वारा ही सीखते हैं. And the real love, real fun, real romance is only in spiritual world, where the moon of romance, Sri Krishna, has no black spots, only creates auspiciousness. Hare Krishna. और जो केवल आध्यात्मिक संसार में है, जहाँ पर प्रेम का जो चंद्रमा है भगवान कृष्ण. I think Kushal Bihari Prabhu's internet is very bad, so I think he has to maybe switch off his video, and then we will only hear the audio as if coming from the spiritual world. Hare Krishna. So Krishna is the moon of the spiritual world, the emblem of spiritual romance of the living entity with himself. इंटरनेट बीच में कट गया था तो मैं सुन नहीं पाया. Okay, Hare Krishna. So Krishna, I said Krishna is the emblem of spiritual romance, is the moon, the emblem of spiritual romance between the living entity and God and he himself. तो कृष्ण आध्यात्मिक संसार के चंद्रमा के रूप में वो प्रेम का प्रतीक है जो जीवात्मा और भगवान कृष्ण ये तीनों के बीच में है. So on this Chaitra Purnima day, Krishna was, the time was, Vishwanath Chakravarti Thakur mentions that this pastime happened in the Pradosa Kal. Pradosa Kal, Prahar is from 8:24 p.m. till 10:48 p.m. Hare Krishna. तो ये जो लीला है ये 8:24 PM से 10:48 PM तक होती है चैत्र पूर्णिमा के दिन. Whether anyone is attentive or not in the class, I am dead sure that Kushal Bihari Prabhu is fully attentive in the class. कोई भी ध्यान ना दे रहा हो कक्षा में, लेकिन कुशल बिहारी दास जरूर कक्षा में ध्यान देगा. This is something which is, I have felt that because recently I did a translation of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. ये मेरी समझ में आया क्योंकि हाल ही में मैंने जयपताका स्वामी महाराज के लिए अनुवाद किया था. And I was like fully sweating, and it was such a because it was really hot, but
in last 17 years, or not just 17 years, last 34 years of my life in this world, I have been never attentive as I was in the pandal with His Holiness Chapada Swami Maharaj. और वहां पर मैं पसीने पसीने हो रहा था और मैं अनुवाद कर रहा था और पिछले 17 सालों में मैंने इतने ध्यान से कोई भी कक्षा नहीं सुनी होगी जितनी मैं उस दिन पंडाल में जय पताका महाराज की कक्षा सुन रहा था. So I was thinking that if I start translating all the classes of all the spiritual masters, I think no one can stop me to go to spiritual world. तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं सभी गुरु महाराज की कक्षाओं का अनुवाद करना प्रारंभ कर दूं तो मुझे गोलोक वृंदावन जाने से कोई नहीं रोक सकता. So this time we have chosen Kushal Bihari Prabhu to get the maximum mercy in this Janmashtami. तो इस बार मैंने कुशल बिहारी दास को चुना है जन्माष्टमी पर कृपा प्राप्त करने के लिए. And he has been really doing it nicely. मैं प्रयास कर रहा हूँ. So this Prados Leela from 8:24 to 10:48 p.m. Krishna actually prepares for Ras Leela. तो ये जो समय है 8:24 से 10:48 रात्रि का, भगवान वास्तव में रास लीला की तैयारियां करते हैं. I was just calculating how much it is and I found out 8:24 to 10:24 is 2 hours and then 2 hours 24 minutes Krishna does Sringar. Hare Krishna. तो मैं गणना कर रहा था कि कितना समय होता है और 2 घंटा 24 मिनट भगवान श्रृंगार करते हैं. Generally we think that in this world only the ladies do a lot of Sringar and the men are just waiting and when my wife will come out of the dressing room and will go out for the party. But the Sringar time of both Krishna and Radharani is same actually. साधारणतः हम सोचते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो श्रृंगार में बहुत समय लेती हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में कृष्ण और राधा रानी बराबर ही समय लेते हैं श्रृंगार करने में. And sometimes Krishna becomes late while dressing up. और कभी-कभी तैयार होने में कृष्ण ज्यादा देर कर देते हैं. And sometimes while dressing up Shri Radha Raman, I have experienced it that if Krishna is really naughty in becoming ready. और कभी-कभी राधा रमन जी को तैयार करने में मुझे लगता है कि भगवान शरारत करते हैं और विलंब करवा देते हैं. And so Krishna was getting ready and Radharani was getting ready and Krishna was just wearing all these ornaments and all those things. At that time, the person who was ornamenting Krishna and everything, the sakhas and all decorating, they heard such a big sound like this. तो कृष्ण तैयार हो रहे थे और राधा रानी तैयार हो रही थी और जो सखा कृष्ण का जो श्रृंगार कर रहे थे, उन्होंने अचानक बहुत तेज आवाज सुनी. And this Sakha who was trying to put something on Krishna's ears, that earrings fell off and it was really a very, very terrifying sound and the earth started shaking, dum, 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 like this. और जो सखा भगवान कृष्ण को कुंडल पहना रहे थे, वो कुंडल उनके हाथ से गिर गया और पूरी पृथ्वी धूम 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 करके हिलने लगी. And the sound was such terrifying and the rumbling of and the trembling of the earth was so horrifying that some of the Brajvasi ladies who were pregnant for last 3-4 months, they had miscarriages. और ये इतनी भयंकर आवाज थी कि और जो इस आवाज को सुनकर जो कुछ गर्भवती स्त्रियां थी जिनको 3 या 4 माह का गर्भ था, उनका गर्भपात हो गया. And the lady started wailing and the husband started coming out and there was all around wailing and wailing and wailing. तो ये स्त्रियां विलाप करने लगी और उनके पति भी परेशान होकर बाहर आ गए और चारों तरफ से केवल विलाप की आवाज आ रही थी. And all the Brajvasis, some of the Brajvasis, they came out and they saw
a very big bull sniffing and making horrible sounds. जब ये सब ब्रजवासी बाहर आए तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़े आकार का सांड था जो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, आवाज कर रहा था. And this bull was using his horns to dig out the banks of Yamuna, and he was time and again urinating, and time and again passing stool, and time and again making big loud sounds. और ये जो सांड था वो अपने सींग से जमीन को कुरेद रहा था और बार बार मूत्र विसर्जन करता था, कभी कभी मल विसर्जन करता था, और इस प्रकार से वो आवाज भी कर रहा था. Nice word, Visarjan, for urinating. I'm just Arishtasur, who is now, I don't know where he is, he would be blessing Krishna Bihari Prabhu with Krishna Prem because he's using this word Visarjan for his urinating. My goodness. Okay, so my goodness, Hindi is such a civilized language that for urinating we said Visarjan. Oh, great. As if it's a sacred item. So this Arishtasur was doing Visarjan everywhere, but because he was a demon, this Visarjan was not that purifying. तो ये अरिष्टासुर सब जगह विसर्जन कर रहा था, लेकिन ये इतने पवित्र कार्य नहीं है, तो सब जगह सबको भय लग रहा था. And time and again Arishtasur was trying to with his hooves he was trying to dig the ground and trying to show his prowess. और वो बार-बार अपने पैर से वो जमीन खोद रहा था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था. And mind you, this is not a small bull that is there in our Gosala like Subal and Gokarna and all those things. Arishtasur was so big that the humps were on the clouds. ये जो सांड था वो कोई छोटा मोटा हमारे गौशाला के सांड की तरह नहीं था, गोकर्णा की तरह. ये इतना बड़ा सांड था कि जो इसका कुबड़ था वो आकाश में बादलों के ऊपर था. And when all the sakhas, all the sakhis, they saw this Arishtasur, they were extremely terrified, and they went to Krishna and started saying, Krishna, Krishna, Bhaktanam Abhayankara. और जो सखा और सखी जिन्होंने इस अरिष्टासुर को देखा वो भयभीत हो गए, भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण भक्ता नाम अभयंकर. And Krishna came directly in front of this demon who is in the form of the bull and started doing like this, because ladies were also there. So तो कृष्ण सीधे इस राक्षस के सामने आ गए और अपने हाथों को इस प्रकार करने लगे क्योंकि वहां पर बहुत सारी गोपियां भी थी. So these things of impressing the ladies are actually coming from Krishna, from the spiritual world. तो ये सब जो स्त्रियों को मोहित करने के लिए है, ये सब वास्तव में भगवान कृष्ण से ही आती हैं कलाएं. And because we want to imitate and become mini Krishna in this material world, that's why we also try to imitate and do that. क्योंकि हम भी भगवान कृष्ण की नकल करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये सब कार्य करते हैं भगवान कृष्ण. And seeing Krishna so confident, this Arishtasur started making very, very horrifying sounds, and Krishna was just peacefully standing, keeping his hand over Subala. और कृष्ण के इस अभिमान को देखकर यह अरिष्टासुर और भी क्रोधित हो गया और भगवान कृष्ण आराम से सुबल सखा के ऊपर हाथ रख के. So this Arishtasur started charging towards Krishna with great force, and Krishna effortlessly held the horn of Arishtasur and just did like this, and Arishtasur went 18 meters back. और यह जो राक्षस था वो भागते हुए भगवान पर आक्रमण करने आया
और भगवान ने बहुत आसानी से उसके सींग को पकड़ के उसको पीछे इस प्रकार धक्का दे दिया जिससे वो 18 मीटर पीछे चला गया। And all the Brajavasis, all the ladies especially, oh wow, 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 just like you watch a WWE champion series. तो जिस प्रकार आप जब WWE चैंपियन सीरीज देखते हैं तो आप जिस प्रकार प्रशंसा करते हैं उसी प्रकार वृंदावन की गोपियां स्त्रियां भगवान कृष्ण को देखकर प्रशंसा करने लगी। And seeing the ladies laughing and giggling and not getting terrified and seeing Krishna's actions like this, again Aristasur started charging. He was like urinating and passing stool and doing all around Visarjan, and then charged, and Krishna again then held both the horns this time, and Aristasur was not able to do anything. और इस प्रकार गोपियों को देखकर तालियां बजाते हुए अरिष्टासुर और भी क्रोधित हो गया और बहुत तेजी से आक्रमण करते हुए भगवान कृष्ण के पास आया और भगवान कृष्ण ने बहुत आसानी से उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया और Aristasur could not do anything. और अरिष्टासुर कुछ नहीं कर सका। You know, the greatest frustration when a person has the greatest frustration is not in defeat. The greatest frustration is that you ever not even could disturb your enemy or opponent. Forget about defeat. तो सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो पराजित करने में नहीं होती है, पराजित होने में नहीं होती है। जब आप अपने शत्रु का कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाते तब जब आपको क्रोध आता है। And when Krishna was effortlessly holding the two horns of Aristasur and he was not able to do anything, he was completely locked, and the frustration in the face of Aristasur came out with more force, the Visarjan of urine. और जब भगवान कृष्ण बहुत आसानी से उसके सींग को पकड़कर खड़े थे और अरिष्टासुर कुछ नहीं कर पा रहा था तो उसकी जो गुस्सा था वो मल मूत्र विसर्जन के रूप में और ज्यादा हो गया। I don't know what he would have drank and eaten that he could do so much. Generally, it is for all of us, it is like a limited capacity and quantity. मैंने उसने उस दिन क्या खाया था कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में मल मूत्र विसर्जन कर पाया। हम सब लोग तो थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं। So this is how the demons act. They can do anything, and very mystically, really. And then then Krishna was holding, and he was trying to, because he could not do anything, so he thought that I will just urinate and pass stool. तो इस प्रकार से राक्षस व्यवहार करते हैं क्योंकि कृष्ण बहुत आसानी से उसको पकड़े हुए थे तो उसने सोचा कि चल मैं मलमूत्र ही त्याग देता हूँ। Because what he can do, anyway, all other activities he was doing were stopped. So, but this he was doing as a service to Sri Vrindavan Dham maybe. So he continued doing that very nicely. क्योंकि उसकी बाकी सब क्रियाएं रोक दी गई, केवल यही क्रियाएं थी वो कर सकता था तो मलमूत्र ही त्याग रहा था वहां पर और वृंदावन को पीछ रहा था। Krishna thought that if he is not killed, then I think he will devour the entire Vrindavan with his stool and urine. कृष्ण ने सोचा कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये अपने मलमूत्र से पूरे वृंदावन को डुबो देगा। And then Krishna then took his two horns and just like a dhobi, like a washerman, Sukadeva Goswami says, just like a washerman takes a wet cloth and starts ting, ting, tak, tak, tak. Krishna took both the horns and like a wet cloth he was beating and beating and beating like this. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिस प्रकार कोई धोबी किसी भीगे कपड़े को उठा के पटकता है उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़ के उसको उठा के पटक दिया। And when Krishna did that, Sukadeva Goswami says this time he was profusely doing urinating and stool. I think the entire bladder got over. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार कृष्ण कर रहे थे तो उसका वो
लगातार मल मूत्र विसर्जन कर रहा था, उसका जो है पूरी ब्लैडर खाली हो गया होगा। And then he was feeling that I could not do anything now, and he laid completely drained out, because so much of diarrhea, you really feel drained out. और उसने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो पूरी तरह इतना डायरिया होने के बाद किसी की भी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। And then when he was completely drained like this, then Krishna broke one of his horns and used one of his horns to stuck in his stomach very heavily, and then along with the stool and urine, the blood was flowing in Sri Vrindavan Dham. और जब इस प्रकार उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई, तो भगवान कृष्ण ने उसके एक सींग को तोड़ा और उसके पेट में घोंप दिया, और मल मूत्र के साथ साथ खून की नदियां भी बहने लगी। But unfortunately, this Aristasur was so adamant. He was not dying, but he was feeling so much of pain because he was not dying, and he didn't want it to die, and so it was a very painful situation for Aristasur. तो ये अरिष्टासुर मर नहीं रहा था, और इस कारण से उसके लिए बहुत ही पीड़ा कष्टदायक था। And so Yamaraj, Krishna's compassion, invited Yamaraj to come, and when Yamaraj came, the god of death came, then Aristasur died and was relieved of the pain. और कृष्ण की कृपा से वहां पर यमराज आए, और यमराज के आने के बाद इस अरिष्टासुर ने अपने प्राण त्याग दिए और उसका कष्ट समाप्त हो गया। And then this Aristasur was liberated, and all the demigods, they showered flowers. और फिर इस अरिष्टासुर को मुक्ति प्राप्त हो गई, और सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। Somehow in the entire 10th canto, I have seen that the demigods have no other business than just showering flowers on Krishna's all pastimes. तो मैंने देखा है कि इस दशम स्कंद में देवताओं को और कुछ काम नहीं है, केवल वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को होने के बाद पुष्प वर्षा करते हैं। This is something I realized, that I should never become a demigod in any of the life. इसीलिए मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि मुझे कभी भी कोई देवता नहीं बनना है। Because I think we can do much more things in Vrindavan Dham than just showering flowers at the end of the Leela. तो मुझे लगता है कि हम वृंदावन धाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, और देवता बन के केवल हम पुष्प वर्षा ही कर सकते हैं। But then we have to give up all these heavenly pleasures of dancing with Urvasi and taking all these heavenly fruits and dishes and drinking somras. We have to give up all these attachments. तो लेकिन उसके लिए हमें उर्वशी के नृत्य से जो सुख मिलता है, या सोमरस पीने से जो सुख मिलता है, उस किसी भी प्रकार के मोह का त्याग करना पड़ेगा। So then when this Aristasur got killed, and then Krishna started dusting himself, and then again went to the dressing room and did some more dressing, and then went straight to the Ras Leela. फिर कृष्ण ने अपने शरीर को झाड़ा, और उसके बाद पुनः श्रृंगार करने चले गए, और उसके बाद वो सीधे रास लीला के लिए चले गए। And Srimati Radharani was waiting for a long time, and Srimati Radharani said, "Look, you cannot dance with me today." श्रीमती राधा रानी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, और उन्होंने कहा, देखो आज आप मेरे साथ नृत्य नहीं कर सकते। So Krishna said, "What is the problem?" And Srimati Radharani and all the gopis said, "You are fully contaminated." कृष्ण ने पूछा कि क्या समस्या है? तो सब गोपियों ने और राधा रानी ने बोला कि आप अपवित्र हो चुके हैं। Krishna said that anyone who just remembers and chants one of my name once, he becomes completely purified. And if you have any doubt, go and hear the Bhagavatam class on Sunday morning by Sri Nitai Das. तो कृष्ण ने कहा कि मेरे
नाम को एक बार सुनने से कि किस प्रकार लोग पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो इसको तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा, श्री निताई प्रभु की कक्षा जाकर सुनो। And Radharani became very angry hearing my name. Maybe. And said that nonsense, we will not, we understand everything, how pure you are. We do not want explanations from anyone. तो राधा रानी ने कहा कि हमें किसी और से कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब कुछ पता हुआ है पहले से ही। And all these fellows are all like you only. They keep on speaking all nonsense about you, keep on speaking all lies about you, and you give special commission to them. और उन्होंने कहा कि ये सारे लोग सब तुम्हारी तरह ही हैं, वो बकवास करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में झूठ झूठ फैलाते रहते हैं और तुम उनको जरूर कुछ ना कुछ पैसा देते हो। And something like spiritual CIA agents. वो आध्यात्मिक CIA एजेंट्स की जैसे हैं। And they keep on, and we see that you really cheat them, you really give them so much of pain, but I don't know what mysterious personality you have that they keep on following you, you keep on betraying them, you keep on giving them a lot of disturbance, and they keep on following you. So we don't believe on them, you are contaminated. और हमने देखा है कि तुम लोगों को कितना कष्ट देते रहते हो, हमेशा समस्या देते रहते हो, लेकिन फिर भी वो आपका ही गुणगान करते रहते हैं। इसलिए हमें कोई भरोसा नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप अपवित्र हो चुके हैं। And then Krishna said कि what I need to do to get myself purified. तो कृष्ण ने कहा कि मुझे स्वयं को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा। Just imagine this, Krishna is the source of all purity, and he is begging in front of the gopis, how do I become pure? तो कल्पना कीजिए, कृष्ण जो सभी शुद्धता की, पवित्रता के स्रोत हैं, वो गोपियों से भिक्षा मांग रहे, पूछ रहे हैं कि बताओ कि मैं कैसे खुद को शुद्ध कर सकता हूँ। And the gopis said, you have to travel all around the creation universe and get holy deep in all the holy places of the entire universe. तो गोपियों ने कहा कि आपको इस ब्रह्मांड की सभी पवित्र जगहों पर जाना पड़ेगा और वहां पर जो नदियां हैं उनमें आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। And Krishna said that will take a lot of time. तो कृष्ण ने कहा तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। And then the gopis said, what do you think, dancing with Radharani, is it a simple affair? You need to spend those times and you need to do this austerity to associate with our Radhika. And like this the gopis said, and the Radharani and the gopis, they turned their face and started walking away. तो गोपियों ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि राधा रानी के साथ नृत्य करना इतना साधारण कार्य है? तुम्हें ये तपस्या करनी पड़ेगी और जाके सब जगह डुबकी लगानी पड़ेगी। और फिर वो इस प्रकार कह के वापस जाने लगी। And Krishna said, Sakhis, you don't know my progress. So like this, just to तो कृष्ण ने कहा, सखियों रुको, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। And the gopis just now saw how Krishna killed Aristasur, but the nature of the love of Vrindavan, that gopis started laughing and said that when there is a lightning and a thunderbolt in Vrindavan, you hide behind Yasoda's pallu, and we know how much you are capable of doing anything. तो वृंदावन की यही सुंदरता है कि अभी भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा था और गोपियों ने देखा था, लेकिन गोपियां कहती हैं कि हमें पता है कि तुम कितने बहादुर हो, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तुम माता यशोदा के पल्लू के पीछे छुप जाते हो। And we'll just see what you are doing. हम देखेंगे तुम क्या करते हो। And Krishna, he just pressed his end of his foot, and then he did like this and created a small ditch. तो
कृष्ण ने अपने पैर की एड़ी को नीचे दबाया और उससे इस प्रकार दबाकर एक छोटा गड्ढा बना दिया. And then Krishna invoked all the holy places who all came and started putting one by one dandavat to Krishna and started filling that place with divine waters. और कृष्ण ने सभी तीर्थ स्थलों को बुला लिया और ये सभी तीर्थ स्थल आकर भगवान कृष्ण को नमस्कार करने लगे और उन्होंने अपने अपने जल से इस गड्ढे को भर दिया. And Krishna said to the gopis, you see, this water contains the water from all the holy places. And the gopis said, have you ever spoken any time truth in your life? तो कृष्ण ने कहा, देखो इस गड्ढे में सारे तीर्थों का पानी भर चुका है. तो गोपियों ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी एक भी सत्य बोला है? And then Krishna invoked and said, oh, all these divine personalities, you all go and introduce yourself in front of these girls who are just making fun of me. तब कृष्ण ने कहा कि हे तीर्थ स्थलों, पवित्र स्थलों, तुम अपना परिचय इन गोपियों को दो. And then Yamuna Devi, those who are ladies, they were wearing beautiful sarees, and those who are men, they were wearing a nice dhoti, and they all started coming, and then they said, I am Prayagraj, and the lady said, I am Yamuna, I am Ganga, I am Narmada, and they started all putting dandavat after dandavat after dandavat, and then they entered into the pond. जो स्त्रियां थी वो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई थी और जो पुरुष थे वो धोतियां पहने हुए थे और वो सभी एक एक करके जो अपना परिचय दे रहे थे कि मैं प्रयागराज हूँ और मैं यमुना हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं नर्मदा हूँ, और वो बार बार दंडवत कर रही थी भगवान को और दंडवत करने के बाद वो इसमें कूद गए गड्ढे में. And then Krishna went inside the pond that was created and took a dip 2-3 times and came out and started drying his clothes in great pride. और कृष्ण ने फिर इस तालाब में स्नान किया और स्नान करके कृष्ण वापस बाहर आ गए और अपने कपड़ों को पोंछने लगे. घमंड के साथ. And then Lalita Devi said, useless magician, get lost. And then he took Radharani and all the gopis and they started moving out. And Krishna was just standing, cannot do anything. और ललिता देवी ने कहा कि बेकार का जादूगर है और ऐसा कहकर वो सब लोग वहां से पीछे वापस जाने लगे. And then Krishna said, now you are so contaminated with pride that in order to purify yourself, you need to take bath in my pond. Then I will associate with you. तो कृष्ण ने कहा कि तुम अपने घमंड के कारण इतना अपवित्र हो गई हो कि अब मेरा संग करने के लिए तुम्हें पहले पवित्र होना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मेरे तालाब में जाकर स्नान करना पड़ेगा. And Srimati Radharani said, I will die, but I will never even touch the water of your pond, which is completely contaminated because of the sin of killing a bull. तो राधा रानी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे तालाब में मैं नहीं स्नान करूंगी क्योंकि यहाँ का पानी तुम्हारे इस सांड को मारने के कारण जो पाप तुमने धोए हैं उससे अपवित्र हो चुका है. We will create our own pond and take bath. हम अपना खुद तालाब बनाएंगे और उसमें स्नान करेंगे. And that pond will be the best pond in the entire creation. और वो जो तालाब होगा वो इस पूरे सृष्टि का सबसे अच्छा तालाब होगा. And that will not have any sinful contaminated waters. और उसमें कोई भी पाप के फल से भरा हुआ पानी नहीं होगा. And then Srimati Radharani called all the gopis and sakhis. All the gopis. It was like somehow so many gopis, manjaris and all crores and crores, they assembled and they all
took out their bangles and started digging the ground. और राधा रानी ने अपनी लाखों करोड़ों गोपियों को, सखियों को बुलाया और वो सभी आई और अपने कड़ों को उतार कर वो खोद कर जमीन को खोद कर तालाब बनाने लगी वहां. And then in 1 hour there was a big pit with the when they dug out the mud through their bangles. और 1 घंटे में ही वहां बहुत बड़ा गड्ढा बनकर तैयार हो गया जो कि गोपियों ने अपने कड़ों से खोद के निकाला था. And Krishna was just peacefully waiting while the gopis were sweating and doing all the hard labor along with his sakhas and smiling and giggling in front of his kund. और जब ये गोपियां गड्ढा खोदने के लिए पसीने पसीने होकर इतनी मेहनत कर रही थी, उस समय कृष्ण बहुत आराम से बैठे हुए थे और अपने सखाओं के साथ हंसी मजाक कर रहे थे. And some of the sakhas said, "Oh Krishna, I don't think you will charge anything to give some of your water to these gopis." तो कुछ सखा ने बोला कि हे कृष्णा, मुझे नहीं लगता कि तुम गोपियों को अपने तालाब में स्नान कराने के लिए उनसे कुछ वसूल करोगे. And then another sakha said, I don't think Krishna would charge, but if Radharani comes our side, then we can give it for entire water for free. और दूसरे सखा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कृष्ण उसके लिए कुछ भी मूल्य लेंगे, लेकिन यदि राधा रानी हमारे पक्ष में आ जाती हैं, तो ये पूरा तालाब हम फ्री में दे देंगे. And then Radharani said, we will get all the gopis, give them pots, and we will get water from Manasi Ganga, but we will not take your water. तो राधा रानी ने कहा कि हम सारी गोपियों को मटके देंगे और वो जो है पानी लेकर मानसी गंगा से आएंगी और हम तुम्हारे तालाब का पानी छुएंगे भी नहीं. And Krishna was thinking that if the gopis they start bringing water from the Manasi Ganga, the entire night will get over and today's Ras Leela will be completely flop. और कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मानसी गंगा से जाकर पानी लाएंगी तो आज की पूरी रात इसी में निकल जाएगी और रास लीला नहीं हो पाएगी और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा. Then Krishna actually invoked the representative of all these holy places, and this personality who was male, he was decorated with beautiful cloth and he was dazzling, and he went and paid Dandavat obeisances on behalf of Krishna to Srimati Radharani. तो कृष्ण ने सभी तीर्थ स्थलों को पुनः बुलाया और उनमें जो तीर्थ स्थल थे जो बहुत ही सुंदर कपड़ों में आए थे, उन्होंने जाकर राधा रानी के सामने कृष्ण की ओर से दंडवत किया. And the representative of all these holy places, this person, he started glorifying Srimati Radharani and said ki your lotus feet is being massaged by Krishna, who is the source of entire creation. You are the queen of Vrindavan. You are the real mistress of all of us. Our goal of our life is to surrender at your lotus feet. तो ये जो तीर्थ स्थलों के प्रतिनिधि थे, वो जाकर श्रीमती राधा रानी की बहुत गुणगान करने लगे और कहने लगे कि आपके चरण कमलों को भगवान कृष्ण स्वयं दबाते हैं, जो कि स्वयं इस सृष्टि का स्रोत है, और आपके चरण और Hare Krishna. And then they said that you are the empress of Sri Vrindavan. You are our real mistress, and the goal of our life is to just surrender and do some service at your lotus feet. और उन्होंने कहा कि आप इस वृंदावन की सम्राज्ञी हैं और हम सभी की भी महारानी हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है आपके चरणों में समर्पण करना. And Srimati Radharani said, what service all of you want to do? तो राधा रानी ने पूछा कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं. And then all these personalities unanimously they said that we just want to fill our waters and make our water
sacred by filling it in your kund. और इन सभी व्यक्तियों ने बोला कि हम आपके इस तालाब में प्रवेश करना चाहते हैं और आपके इस तालाब में प्रवेश करके हम स्वयं को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं. And Srimati Radharani just smiled, giving them indication to do that. और श्रीमती राधा रानी ने केवल मुस्कुराया और उनको इशारा किया कि वो ये कर सकते हैं. And then as soon as Srimati Radharani just smiled, then this representative of all the holy places, they made a big hole in the kund of Krishna. और जब श्रीमती राधा रानी ने ऐसे आज्ञा दी तो इन सब व्यक्तियों ने भगवान कृष्ण के कुंड में एक बड़ा सा छेद कर दिया. And then there was waves of water gushing out and entering the kund of Srimati Radharani. और फिर वहां से बहुत तेज बहाव से पानी जाने लगा और सीधे जाकर राधा रानी के कुंड में भरने लगा. And Krishna came and paid dandavat obeisances to the water accumulated in this pond of Srimati Radharani. और कृष्ण ने आकर उस जल को दंडवत प्रणाम किया जो कि राधा रानी के कुंड में भर गया था. And Krishna said to Srimati Radharani that just like you are most dear to me, your this kund will be celebrated as the most dear kund in my life, and I would come every day to bathe in your kund. तो कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार आप मुझे प्रिय हैं और मैं इस कुंड में आकर प्रतिदिन स्नान करूंगा और ये कुंड मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है. And anyone who would offer obeisances, who would pray and chant prayers, and who would come and do his bhajan near your kund, we will definitely get service to your lotus feet and get love of Vrindavan Dham. और जो भी यहाँ आकर इस कुंड को प्रणाम करेगा और यहाँ पर अपनी साधना करेगा वो निश्चित रूप से आपकी सेवा को प्राप्त होगा और वापस वृंदावन धाम जाएगा. And Srimati Radharani becomes extremely pleased and then says that your kund will be the most dear object of my life, and I would come regularly to take bath in your kund, and anyone who takes bath in your kund will definitely get service in Sri Vrindavan Dham. श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आपका जो कुंड है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और मैं यहाँ प्रतिदिन आकर स्नान किया करूंगी और जो भी आकर आपके कुंड को प्रणाम करेगा और यहाँ पर साधना करेगा वो निश्चित रूप से वृंदावन की सेवा प्राप्त करेगा. And after this, near this Radha Kund and Syama Kund, they performed their Ras Leela, and this happened in the Chaitra Purnima day of one day in Sri Vrindavan Dham. और फिर इसके बाद श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने वहाँ रास लीला की और ये जो लीला है वो चैत्र प्रतिपदा को हुई थी. Purnima. चैत्र पूर्णिमा को हुई. So we can simply understand how sacred is Radha Kund and Shyama Kund. तो हम देख सकते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड कितने पवित्र हैं. The most sacred of all the holy places of this entire creation felt themselves sacred of getting a place of residence in Radha Kund and Shyam Kund. तो सभी तीर्थ स्थल इस संसार के जो हैं उन्होंने इन राधा कुंड और श्याम कुंड की शरण प्राप्त करके स्वयं को पवित्र महसूस किया. They felt that their life is purified because of their presence in Radha Kund and Shyam Kund. और उनको यह अनुभव हुआ कि उनका जीवन इस राधा कुंड और श्याम कुंड में आने के कारण पवित्र हो गया.
we can become completely pure of all our anarthas. We can become great souls. We can become very civilized. We can speak beautifully. We can follow all the principles of spirituality. And by taking bath in all these rivers, these were personified pure places. So how much pure they would be, because by taking bath in these rivers and these places, one becomes completely pure. तो हम भक्ति कर सकते हैं, हम पवित्र हो सकते हैं, और ये जो तीर्थ स्थल है ये सभी लोगों को पवित्र करते हैं, तो ये स्वयं कितने पवित्र होंगे. But purity is not the goal of life. लेकिन पवित्रता जीवन का लक्ष्य नहीं है. Even these most holy layers, who are the personification of all purity, they aspired to render some service to Sri Radha Krishna in Sri Vrindavan Dham. और ये जो संपूर्ण पवित्र व्यक्तिकरण है, ये भी राधा और कृष्ण के चरणों में जाकर स्वयं को पवित्र करना चाहते हैं. So we can understand that the goal of life is to actually develop love for Krishna and get an opportunity to render loving devotional service at their lotus feet. तो हम समझ सकते हैं कि जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण को प्रेम करना है और उनके चरणों में समर्पण करना है, उनकी सेवा प्राप्त करना है. We are not devotees of purity, we are not devotees of positivity, we are not devotees of detachment, we are not devotees of anything. We are simply servants of the servants of Srimati Radharani. हम किसी भी शुद्धता के भक्त नहीं हैं, हम किसी भी आशावादिता के भक्त नहीं हैं, हम किसी और चीज के भक्त नहीं हैं, हम केवल भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के दासों के दास बनना चाहते हैं. So we must have the right goal in our life, and the most perfect goal in our life is to become servant of Srimati Radharani. तो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, जो सबसे सही लक्ष्य है, वो है राधा रानी की सेवा करना. So let's this Janmashtami every day from today is the 3rd of August 2022, and we have almost like 18th August is Janmashtami, so we have around 15 days remaining. Let's remember every day Shri Radha Kund and Syam Kund before taking rest, and deeply meditate on the banks of Radha Kund before sleeping, just to invoke the presence, the auspicious presence of Shri Radha Kund and Syam Kund in our lives. तो अभी जन्माष्टमी आने में 15 दिन बाकी हैं, तो हम ऐसा प्रण करते हैं कि प्रतिदिन विश्राम करने से पहले हम अपने मन में राधा कुंड और श्याम कुंड का स्मरण करेंगे, और राधा कुंड और श्याम कुंड को हमारे हृदय में अनुभव करेंगे. So I remember a small little baitak in the boundary of Radha Kund and Syama Kund, and every time I go to Vrindavan Dham in the morning time at 4 o'clock, I go to that place and sit down in that baitak and chant Hare Krishna. तो मुझे राधा कुंड के पास में एक बैठक की याद है, और जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ तो वहाँ सुबह 4 बजे उस बैठक में जाकर मैं अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ. And it is such a divine experience early in the morning where no one is there, and just sitting on that baitak and just peacefully chanting Hare Krishna in the presence of Shri Radha Kund. और वहाँ पर इतने अच्छे, इतने दैवीय वातावरण में हरे कृष्ण महामंत्र का श्री राधा कुंड के उपस्थिति में जप करना बहुत ही अच्छा लगता है. With the fragrance that is coming out from the waters of Shri Radha Kund and Syam Kund, and the bridge touching the water and then touching your body,
such a divine experience. तो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड से जो सुगंध आती है उसके वातावरण में और जो जल है उनका उस पुल के बीच में जब आपको छूता है, टच करता है, तो वह अनुभव बहुत ही दैवीय होता है. And early in the morning at maybe 5 o'clock before the sunrise, so many Brajvasis ladies would come and then just, with their small diyas, they would offer Aarti of Radha Kund and float that diya in Radha Kund. सूर्योदय से पहले 5 बजे के आसपास वृंदावन की जो ब्रजवासी स्त्रियां हैं वो आती हैं और छोटे छोटे दीपक लेकर राधा कुंड की आरती करके उन्हें राधा कुंड में प्रवाहित करती हैं. And then these deepaks, these diyas would simply float on the water of Radha Kund, and while watching those diyas, I would chant Hare Krishna. और ये जो दिए राधा कुंड के जल के ऊपर तैरते हुए जाते हैं और उन दियों को ध्यान करते हुए मैं उनके सामने जप करता हूँ. I used to think that how fortunate are these diyas, because they are released from these Brajavasis. They have got shelter of Brajavasis. They could get shelter of Shri Radha Kund. और मैं सोचता था कि ये दिए कितने भाग्यशाली हैं कि ब्रजवासियों के संग के कारण उन्हें राधा कुंड में प्रवाहित होने का अवसर मिला. So in this way, if we serve the devotees and with a sincere and loving heart and always appreciate them, we would definitely get a chance to stay near Radha Kund. और यदि हम अपने प्रेम से, अपने हृदय से यदि भक्तों की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी राधा कुंड के पास में रहने का अवसर प्राप्त होगा. Raghunath Das Goswami has written a song where he has mentioned that of all the places of residence, one can live in a bungalow, one can live in a penthouse, one can live in the most sophisticated place, but the most auspicious place of residence is in the banks of Shri Radha Kund. रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि रहने के सभी स्थानों में कोई व्यक्ति कहीं किसी बहुत बड़े महल में रह सकता है, किसी बहुत बड़े बंगले में रह सकता है, लेकिन सबसे जो पवित्र स्थान है वो राधा कुंड है पूरी सृष्टि में. And by praying to Shri Radha Kund, by surrendering our lives to all our acharyas, maybe in this life we would get a residence near Shri Radha Kund. और अपने हमारे गुरु और आचार्यों की शरण में जाने से, उनके चरणों की सेवा करने से हमें भी राधा कुंड में के पास रहने का अवसर मिल सकता है. How many of you really want to make your residence in Shri Radha Kund? Please raise your hands. Not like yellow hands, the real hands, by switching on your videos. Really, all this. कितने लोग राधा कुंड के पास जाकर रहना चाहते हैं? अपना येलो हैंड मत दिखाइए, सब लोग अपना वीडियो ऑन करके अपना हाथ दिखाइए. So I'm able to see some of the hands, and yes, yes, all are raising hands. I am also raising my hand. So we all want, and all devotees are so happily raising hands. Very good. Hare Krishna. I'm so happy to meet with all these devotees who are all raising hands with so much of happiness. So if all of you are raising hands, so all of you also have to do a little bit of tapasya of chanting the holy names as attentively as possible, remembering Shri Radha Kund every day. तो यदि आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं तो आपको एक और तपस्या करनी होगी कि प्रतिदिन बहुत ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा. And I am telling you, by the mercy of Radha Kund and Shyama Kund, which is actually one of our acharyas, he says that Radha Kund and Shyama Kund is liquid love of Krishna.
हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड का जो जल है वो है भगवान कृष्ण का द्रवित रूप में जो प्रेम है। And anyone who remembers Shri Radha Kund and Syama Kund would fill Krishna and Srimati Radharani would fill his heart with love for them. और जो भी राधा कुंड और श्याम कुंड का ध्यान करता है और राधा रानी और कृष्ण उनके हृदय को प्रेम से भर देंगे। So let us just for the next 15 days just remember ourselves. If anyone who have gone to Radha Kund, you would have experienced that, and if you have not gone, then please see the photographs or see the videos or something, and just think that you are sitting and chanting on the banks of Radha Kund and just chant, forgetting everything of this world the next 15 days. तो अगले 15 दिन आप में से जो लोग राधा कुंड गए हैं उसका ध्यान करें, और जो लोग नहीं गए हैं वो आप फोटो देख सकते हैं और स्वयं को वहां पर ध्यान लगाते हुए आप राधा कुंड का 15 दिन ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं। And I'm sure this Janmashtami would be a completely different Janmashtami than any other Janmashtami. और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जन्माष्टमी बाकी सारी जन्माष्टमियों से अलग जन्माष्टमी होगी। So this is my request this Janmashtami, that let us this Janmashtami really meditate on Shri Shyama Kund and Radha Kund, and really aspire and pray that we would this life, at the end of our life, we get a residence at their banks and witness all the divine pastimes of Shri Radha Krishna. तो हम श्री राधा कुंड और श्याम कुंड पर ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन के बाद हमें राधा कुंड श्याम कुंड के पास निवास बनाने को मिले, और हम राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका निरंतर दर्शन कर सकें। So this Radha Kund and Syama Kund are very special because every day Krishna would perform midday Ras Leela near Radha Kund. और ये राधा कुंड श्याम कुंड विशेष है क्योंकि प्रतिदिन दोपहर में भगवान यहाँ पर लीला करते थे। So Krishna will sneak out from all the gopas and the grazing cows and everyone, and just somehow ask Balramji to handle the situation, and Krishna with some of the very special of his friends who are called Parama Prestha Sakhas, Priya Narma Sakhas, Subal, Stoka Krishna, Amsu. Krishna would sneak out with them and come to Radha Kund. तो कृष्ण चुपके से अपने सखाओं के बीच में से निकल आते थे, अपने बलराम जी को बोल देते थे संभालने के लिए, और उनके जो बहुत ही क्लोज सखा हैं जिनको नियत Parama Prestha, परम प्रेष्ठ सखा, and there Srimati Radharani in Yavat would make Jatila and Kutila feed nice lunch and fan both of them and make them sleep, and then with her gopis she would also sneak out from Yavat and come to Radha Kund. और उधर राधा रानी भी जटिला और कुटिला को अच्छे से दोपहर का भोजन कराने के बाद चुपके से अपनी सखियों के साथ यावट से राधा कुंड और श्याम कुंड के पास आ जाती थी। And in the mid time when all the Brajvasis were taking their afternoon nap, the gopis and the gopas and Krishna would have their afternoon rasa dance near Radha Kund. और जब दोपहर में सारे ब्रजवासी सो रहे होते थे, उस समय कृष्ण और राधा रानी और सारे सखा गोपियां अपनी रास लीला करते थे, दोपहर की रास लीला करते थे। And sometimes they would play in the waters of Radha Kund, sometimes they would splash water, sometimes Krishna would splash water on the gopis, sometimes gopis would splash water on Krishna, and sometimes they would have water wrestling in Radha Kund. और कभी-कभी जो राधा रानी कृष्ण के ऊपर जल फेंकती थी और कृष्ण गोपियों और राधा रानी के ऊपर जल फेंकते थे, और कभी
जल में कुश्ती किया करते थे। And every time Krishna would lose in Radha Kund. और हर बार राधा कुंड में कृष्ण ही हारते थे। And Krishna would be extremely happy to be defeated from all the Sakhis in these water pastimes that would happen every day in the midday in Radha Kund. और कृष्ण इन सखियों से इन लीलाओं में जो दोपहर की लीला है उसमें हार कर बहुत खुशी का अनुभव करते थे। While Krishna would play with the gopis and Sakhis in Radha Kund, there would be so many gardens on the outskirts of Radha Kund where different manjaris would make different varieties of garlands, and when they would come out from their water pastimes, they would wear new dress and they would make Radha Krishna wear special garlands. और राधा कुंड और श्याम कुंड की सीमा के बाहर मंजरियां बैठकर गार्लैंड मतलब माला बनाती थी, और जब राधा कृष्ण और गोपी और सखियां ये सब खेल के लीला के बाद बाहर निकलते थे, तब वो जो माला है वो मंजरी उनको पहनाती। And there would be parrots who would be guarding Yabat to ensure when Jatila and Kutila would get up, and there will be parrots in Radhakund, and these parrots would signal like this, and giving the signal that Jatila and Kutila they have got up, and Radharani and all the gopis would leave Radhakund and run to Yavat. और यावट में कुछ तोते होते थे और कुछ तोते राधा कुंड में बैठे रहते थे, और जैसे ही जटिला और कुटिला उठने लगती थी तो यावट के तोते अपना सिग्नल दे देते थे राधा कुंड के तोतों को, और ये तोते जैसे ही बताते थे तो राधा रानी और सारी गोपियां वहां से चले जाते थे। Something like transcendental tweeters. वो जो है दैवी ट्विटर की तरह है, or WhatsApp. व्हाट्सएप की तरह। So like this they would communicate, and then Radharani and all the Sakhis would run, and they would see all these garlands and everything, and they would wonder what happened, where did you go? And then Lalita and all the Sakhis would bring varieties of garlands of as Mahaprasadi of Krishna, and then they would wear Jatila and Kutila. तो ये जब वापस आती थी राधा रानी तो ये जटिला कुटिला उनसे उनकी मालाओं को देखकर पूछती थी कि ये कहाँ से हैं, तो ललिता देवी उनके लिए महाप्रसाद के रूप में माला लेकर आती थी और उनको पहनाती थी। And Kutila, because she is Kutila, complicated, while smelling the garland, she could understand that this garland has a different smell from where this smell is coming. I think it has the smell of Krishna. कुटिला क्योंकि बहुत चालाक है तो वो गार्लैंड उस माला को सूंघ कर ये समझ जाती थी कि किसी और की सुगंध है, और वो उनको कहती थी कि ये किसी और की सुगंध है, निश्चित रूप से ये कृष्ण ने इस माला को पहना था। And Lalita Devi would say Krishna is there everywhere in Vrindavan Dham, and especially in your complicated mind, and that's how the fragrance is coming. तो ललिता देवी कहती हैं कि कृष्ण वृंदावन के कण कण में विराजमान है, और निश्चित रूप से आपके इस कुटिल मन में भी विराजमान थे। And from there that fragrance is coming out. और वहीं से ये सुगंध आ रही है। And in this way they would try to manage and escape, and again they would, after feeding dinner and making them Jatila and Kutila sleep, Radharani and all the Sakhis would escape from Yavat and reach to Bamsi Bhat, where the night Ras Leela would happen. और इस प्रकार से रात को फिर उनको भोजन कराने के पश्चात जटिला और कुटिला के सोने के पश्चात राधा रानी और सब गोपियों और सखियों के साथ वंशीवट पर पहुंच जाती थी, और वंशीवट पर रात की रासलीला होती थी। So by remembering these pastimes we actually can remember Sri Vrindavan Dham eternally. तो इन लीलाओं को याद करके हम वृंदावन धाम को नित्य अपने स्मरण कर सकते हैं।
Please forgive me that I went extremely late today. तो आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आज बहुत देर तक बोलता रहा. Sri Vrindavan Dham is eternal place, and we can go on and on and on speaking about Sri Vrindavan Dham and its pastimes. तो वृंदावन धाम एक नित्य धाम है और हम उसकी गुणगान करते हुए कितनी भी देर तक बोलते रह सकते हैं. But I understand that you have not taken dinner, so we need to end. तो मुझे पता है आप लोगों ने अभी रात्रि का भोजन नहीं किया है, तो इसलिए हम अब इसको यहाँ समाप्त करते हैं. So please take dinner and please have sweet dreams about Sri Vrindavan Dham. आप सभी रात्रि का भोजन लीजिए और वृंदावन धाम के स्वप्न देखिए. And if Vrindavan Dham doesn't come in your dreams, don't worry, come for the next class on Wednesday. और यदि वृंदावन धाम का स्वप्न नहीं आता है तो आप परेशान मत होइए, अगली कक्षा में फिर से आ जाइए. Someday after the class you will definitely dream about Vrindavan. किसी ना किसी दिन कक्षा के बाद आप जरूर वृंदावन का स्वप्न देखेंगे. I would pray for all of you. आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा. Happy dreams about Vrindavan. Hare Krishna. वृंदावन के सुस्वप्न आपको आए. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री वृंदावन धाम की जय. श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय.